We'll wait for 5 minutes. Very few students are there. दिवाली वेकेशन खत्म हुई कि नहीं? लेक्चर लेना है ना? यस मैम, ले लो। क्यों कम है इतने स्टूडेंट्स? सुबह भी कम थे क्या? और क्या? ठीक है। एक्चुअली मैं डीएससी की एफसी कोऑर्डिनेटर भी हूँ कॉलेज में, तो मैं हाफ एन आवर लेती हूँ अभी। बीच में अगर फोन आया तो डिस्टर्ब होगा थोड़ा। एक 2 ही मिनट वेट करते। कितना हो गया? 12:36, 37। और 2-3 मिनट देखते हैं बच्चे ज्वाइन होते हैं क्या, नहीं तो कंटिन्यू करती हूँ फिर मैं। ठीक है। We are discussing about the flip-flops. I hope all of you have a notebook and pen with you now, because today we are going to study that excitation tables and you need it in front of you, because we have learned the truth table. From the truth table you have to find out the excitation tables. अभी नहीं है तो सभी नोटबुक पेन लेके बैठो। Am I audible now? कुणाला कॉल करते? Am I audible? यस मैम। मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। आ रही मैम आपकी आवाज। एक मिनट। I'll share screen. लास्ट मंडे मैंने लेक्चर लिया था, तब थे काफी बच्चे। फ्राइडे को टाइम नहीं मिला था। लास्ट में लेक्चर में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने?
मैम जे के फ्लिप फ्लॉप का जो जे एंड के इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन था, उसे मैम हम लोग ग्राफ से समझ रहे थे, टॉगल वाला कंडीशन। प्रॉबिन्स तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अभी आई है, तो सिस्टम ऑन होने के लिए टाइम लग रहा है। स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। Okay. We have started sequential logic design unit. We have studied the flip-flop, G-type, T-type, all this. Where we were. ये हो गया है? नहीं मैम, अभी नहीं हुआ ये, मास्टर स्लेव नहीं हुआ। आई थिंक वेवफॉर्म कोई तो एक्सप्लेन किए थे मैंने एक लेक्चर में, ये वाले मैम किए थे वो क्या? रॉबिन रेस कंडीशन वाला ओके, हम लोग डिस्कस। ये वाला। ओके ओके, ये समझ में आया ना सभी को? वेवफॉर्म्स यस आपकी क्वेरी दूर हो गई? आपको कुछ तो प्रॉब्लम आया था ना? मैम, यस मैम, हाँ मैम, क्लियर हो गया। ठीक है। What about preset and clear that we are told that it is a active low. Okay, so a low at the PR input sets Q equal to 1 and low at the clear input sets Q equal to 0. That you have to remember or note down. Then only you can understand the function later on. Okay. Preset input जब low रहेगा तो क्या होगा? Q equal to 1 आएगा और clear input जब active low है तो it sets Q equal to 0. These are the what we have said highest priority inputs. Just already I discussed, I think. Now we already studied the SR flip flop with the SR flip flop. Okay, is it? And this is a SR flip flop with one more inputs. These are the preset and clear. What is the first part? GT, G4, and this is a G1, G2. Do you remember SR flip flop? याद आ रहा है क्या? यस मैम, याद है। Yes. और वहाँ पे कंट्रोल इनपुट भी था, क्लॉक भी था. So now I am not going to explain all these things because see many times I have explained all these things, how it works for 0 1 1 0 and 1 1, how this is going to work. हॅलो. Hello. हा मॅम, ते अपलोड केलं डायरेक्टली, डॉक्युमेंटच अपलोड केलं सर. EWS सर्टिफिकेट साठी नाव काय तुमचं? सर्टिफिकेट भेटलं आज, सर्टिफिकेटच अपलोड केलं. सनी वगैरे बघते, ठीक आहे. ओके.
we have seen the we have discussed about the SR flip flop. Now we are not going to repeat the things again and again. Just we'll see what is difference if preset and clear inputs are additionally there. Is it okay? All of you remember SR flip flop working? Yes, ma'am. Yes. Now see, we are just observing the another inputs, that is there are S and R inputs, but whatever how they work, it will be as previous. Just only we are adding here preset and clear. Okay. Now see, whenever clock is 1, okay, and if preset is 1 and clear is also 1, see, preset is 1, clear is 1 and clock is also 1, then what will be the output? That will be output will be the next state, and it will work as a normal flip flop. You have to remember these things and then go for the for when the inputs are 0 0 0 1 1 0 1 1, that you can see. But now you have to remember these things, that clock is 1, preset is 1, clear is a 1. So Q will be Qn plus 1, that is the next state output. And how it will work? It will work as a normal flip flop. Okay. Now see, clock is 0. Otherwise, whenever clock is 0, preset is 1. Preset is 1. And clear is 0. We are saying that operation going to be performed is a clear. Why? Can anyone? रहता है जब मैम क्लॉक Yes. लो 0 है और क्लियर भी 0 है, इसलिए वो क्यू को 0 You सेट have कर to देगा. think, see, these are preset and clear are having the highest priority that we have seen in one PPT, isn't it? So you don't worry about the clock. This is a statement that they are a highest priority inputs, and what we are saying, they are active low. So preset अगर लो रहेगा तो Q equal to 1 सेट होगा, clear अगर लो है तो Q equal to 0 सेट होगा. Okay, so accordingly, what is that? Now our preset is 1 and clear is a 0. So what is clear is a active low. So Q will be 0. 0. That's why operation perform will be clear only. जो कुछ है output में कुछ नहीं मिलेगा, जो clear will be active. So it will reset the 0. Because see, we are saying that flip flop are again going to use in a counter. So sometimes we need that the counter should start from 0 only. In between नहीं लगता है हम लोगों को, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? Forcefully clear apply करना पड़ेगा. Then we can start the counting like this. अभी सेकंड क्या है? क्लॉक 0 है, थर्ड क्लॉक 0 है, प्रीसेट 0 है, क्लियर 1 है. इसमें से एक्टिव लो कौन है? Who is active low? Preset. Preset. So whenever preset is an active low, what we are saying? Q sets to 1. आता जेवली लेक्चरला आले, परत खाली लगेच जायचंय मला. एक मिनिट. Clock 0, preset 0, clear 1. So now our preset is an active low. So what will be the operation going to be performed? That is a preset. And what will be the state of Q? Preset. State of Q will be? State of Q will be? State of Q will be 1. Why? Any other? Just explain मैम me. प्रीसेट नहीं शुभम, आप मत बोलो. कोई अदर?
Any other, just tell me. Whenever preset is 0 and clear is 1, then what will be the Q? I'm not going to share it. At preset q is equals to 1. 1, Why? because present it's active low. Yes, preset is a active low, and whenever preset is active low, Q is equal to 1. Very good. म्हणजे समजलं. ठीक आहे. So it is a operation perform is going to be preset. Now clock is 0, preset is 0, clear is 0, then output will be again raised, and this operation going to be performed is this will be the prohibited condition. Okay. कुछ ज्यादा ही नहीं. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, इसमें भी क्या रहता है? मास्टर स्लेव. हम लोग बोल रहे एक को मास्टर और दूसरे को स्लेव. सो इन जनरल व्हाट यू कैन से, व्हाट अबाउट मास्टर? मास्टर किसको बोलते हैं, स्लेव किसको बोलते हैं इन जनरल? मास्टर जो कंट्रोल होता है, स्लेव जो जिसको कंट्रोल करता है. Yes. So see, we'll see the directly diagram, and this is the theoretical description of this. क्या है ये? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. पहला जो यहाँ पे लिखा है इतना पार्ट है, पहला वाला जो है मास्टर लैच, और सेकंड को हम लोग बोल रहे हैं स्लेव लैच. कौन सा फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? We're applying input J, clock and K. So it means it is a typically JK flip flop. Okay, just there are two JK flip flops. Can you see it? Can you visualize it? Can you analyze it? Yes, ma'am. सी जेके में क्या रहता है? ये क्यू बार है, वो यहाँ पे इनपुट दिया है, फीडबैक है वहां पे, और ये क्यू जो है वो के को इनपुट दिया है क्या? और मास्टर का आउटपुट स्लेव को कनेक्ट किया है, मतलब स्लेव को कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ पे? मास्टर. सो दैट इज द थ्योरेटिकल सी, वी सी इट. इट इज अ बेसिकली two gated SR flip flop connected together in a series configuration with the slave having an inverted clock plus. यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्ट किया है, ये क्लॉक है, ये क्लॉक यहाँ से दिया है. जब ए एक्टिव रहेगा तो ए एक्टिव नहीं रहेगा, जब ए एक्टिव है तो ये एक्टिव नहीं रहेगा, दोनों में से एक हमें ऑन चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग कनेक्शन थ्रू द इन्वर्टर. वी आर अप्लाइंग क्लॉक थ्रू द इन्वर्टर. ओके. Next, what? The outputs from Q and Q dash, or here it will should be Q bar from the slave flip flop are fed back to the inputs of the master. जो Q और Q bar था वो कहाँ पे दे दिया है? मास्टर को इनपुट दिया है. We are given the inputs to the master with the outputs of the master flip flop being connected to the two inputs of the slave flip flop. Is high master SR latch. मास्टर एसआर लैच बोल रहे हैं हम लोग. यहाँ पे हमें इमीडिएटली वी आर नॉट गेटिंग क्यू एंड क्यू बार एट दिस स्टेज. व्हेन क्लॉक इज हाई, मास्टर एसआर लैच. व्हाट विल मीन्स, व्हाट यू मीन बाय लैच? Level triggered. Yes, it is going to hold the data. Lock. When clock is high, master SR latch will lock the input condition, and as clock is inverted to slave SR latch will not toggle. वो कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे clock inverted गया है, so it is not going to work. When clock goes low, the outputs from master flip flop, जो कुछ हमारे master में output आ रहा है, are latched, and any additional changes to its inputs are ignored. Okay. Now क्या हो रहा है कि गेटेड स्लेव फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड करेगा. अभी इस वक्त क्या करेगा? गेटेड स्लेव फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड करेगा जब लो रहेगा क्लॉक तब. तो हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप क्या है? एज ट्रिगर्ड या लेवल ट्रिगर्ड? फ्लिप फ्लॉप इज एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड? मैम फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड रहता है.
Yes, edge trigger. That's why. See, once you keep in mind that flip flop is a edge trigger and latch is a level trigger, so you can easily understood the waveform. Now here transition or changes in the waveform will takes place either on the low to high transition of clock pulse or high to low transition of clock pulse when you are saying that it is a flip flop and it is a this flip flop is a edge triggered. Okay, so see, on low to high transition of a clock pulse, the inputs of a master flip flop are fed to the gated inputs of slave flip flop, and on high to low transition, the same inputs are reflected on the outputs of a slave. Okay, that actually this is normal flip flop working. Just explain from the waveform point of view. When there are changes, we'll see the waveform, then you can easily understood this all these things. So what the circuit accepts the input data. कब accept कर रहा है? When the clock signal is a high and passes this data to the output on the following edge of the signal. Okay, so master slave JK flip flop is a synchronous device as it only passes data. Synchronous मतलब क्या रहता है? Synchronous. मैम सिग्नल जो मैच It should be करता है. matched. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि क्लॉक अगर हमारा सिंक्रोनस है तो मेरे घड़ी में जब 12:30 होगा तभी आप लोगों के यहाँ पे भी 12:30, तो सिंक्रोनाइजेशन में अगर है देन यू आर इमीडिएटली यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली, इजंट इट? सो दिस इज द concept of synchronous device. It passes only data with the timing of the clock signal. Okay, this is about the master latch, slave latch, whatever we have described theoretically, just it is given here in a diagram. See, this output of master latch is given to the slave latch, and this whatever we have described, that Q and Q bar are fed back to the J and K, that is a master latch input. Okay, and whatever the construction of clock is directly given to the master latch and it is given to the slave by using the inverter, that is a clock bar. Got it? See now, because वेवफॉर्म्स जैसे मैं लास्ट डायग्राम में बोला था कि वेवफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं सभी के, जैसे आप लोग जे के का नेचर ड्रॉ करोगे उसके हिसाब से आपका क्यू चेंज होगा. ऐसे ही नहीं कि ऐसे यहाँ पे ऐसा निकाला है तो ऐसे ही निकालना है, ऐसा कुछ नहीं. इट इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू ड्रॉ same as it is. You can draw as you wish for J and K, but accordingly your Q is going to change. Are you getting this? यस मैम. See, हम लोग जब फिजिकली जर्नल वगैरह चेक करते हैं तब क्या होता है, मेनी स्टूडेंट्स आर कॉपिंग एज इट इज. मतलब कभी कभी कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं, हाँ एक बच्चे ने ऐसे निकाला है तो उतने ही लाइंस ऐसे काउंट करके वैसे ही निकालते हैं. डोंट डू लाइक दिस. जस्ट अंडरस्टैंड
share the screen again. Electricity नहीं थी. Screen दिख रही है क्या? Screen is visible. Yes. वेवफॉर्म एक्सप्लेन करते हो, मुझे ट्रूथ टेबल आज ही देना है वो. क्यों स्लो है यार. Okay, these are the waveforms for master slave flip flop. See, these are the clock. This is the clock, that is a square we are applying. This is called as leading edge, and this is we are calling as a following edge. That is this is low to high, and this is nothing but the high to low. Okay, this is J and this is the K waveform, J and waveform K, because we are applying in the form of 0, 1, as this is a digital. We are applying it input as a J and K as a 0 and 1 form. Okay. What we are saying, how it is going to work? It is going to work at the edge of falling edge, suppose. Okay, you can. So when J is a 0, here J is a 1 or 0 at this stage? 1. 1. One. So J is a 1 and K is a 0. Okay. So Q you are getting as a set. Now see, for this you should know the truth table of the JK flip flop, isn't it? Isn't it? We already seen JK, SR, T. That's why I have told you that you should have a truth table with you, because whenever J is a 1 and K is 0, Q is going to be set. So from reset condition, it is going to be set. It will continue as it is till where? It will continue as it is till, complete my sentence. Next falling edge. Yes, till the next falling edge. So see this fourth vertical dotted line. So this is your falling edge. Now at this stage you have to observe the status of J and K. What is status of J here? 0. K? 1. 1. So J is 0 and K is 1. And whenever J is a 0 and K is 1, we are getting K as a 0. So that is, we are calling it as a reset condition. So again this reset condition is going to be continue, even though it J and K values are changing, doesn't matter. See, it will be remain in a same state till the next falling edge occurs. Okay. मतलब कैसे, अगर क्लास में फिजिकली हम लोग बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि टाइम टेबल सेट है हमारा, 12:30 को ही टीचर आएंगे. अगर किसी का मेरा लेक्चर सपोज 1:20 को हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को जाना है. So there is a some particular timetable that is control, that is like a clock. You have to wait till 1:30 till the next is coming, like this only. Whenever at the falling edge this is going to work. Now at this falling edge, what is J and what is K here? Again J is 1, K is 0. So it will go in a state condition. See this last one. And next falling edge means this one. Okay. So this at this stage again J is 1 and K is 0. So what should be there? Set or reset? Set. So set is going to be continue as it is till the next falling edge is coming, and again the state is going to change either set or reset depending upon
your J and K status at the following age. All of you got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. एक्साइटेशन टेबल का देखते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इसको. काउंटर बाकी के पॉइंट ज्यादा बड़े हैं इससे. ठीक है, जस्ट ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आई विल एक्सप्लेन यू बिकॉज इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू. एक बार अगर समझ में आया तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन किसी को अगर कंफ्यूजन है देन दे विल बी कंफ्यूज्ड. Next, excitation table. See, we have seen the truth tables. Now in sequential logic design, there are two tables. That is, one is a truth table and other is a excitation table. What do you mean by truth table? That shows the operation of the circuit. जो हम लोगों ने बोला कि इनपुट जैसे अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑपरेशन हो रहा है. कहाँ गया ये स्लाइड? ठीक है, तो एक्साइटेशन टेबल क्या रहता है? एग्जैक्टली अपोजिट. ट्रूथ टेबल में क्या रहता है कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं और यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट. एक्साइटेशन टेबल इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ इट. मीन्स व्हाट? क्या रहेगा उसमें? I am saying excitation table is exactly reverse of the truth table. So what do you think? मैम काफी कंडीशन में हमें आउटपुट पता रहता है, उसके हिसाब से हमें इनपुट निकालना रहता है, तो उस केस में एक्साइटेशन टेबल रहता है. Yes, very good. So in excitation table, what you have to do? We have to find out the input from the output. Okay. So let us see. उस slide I think delete हो गई क्या पता नहीं. ठीक है. Suppose this is a truth table of the JK. Okay. So what is truth table? Truth table. Just don't confuse in a truth table and excitation table. Remember this word. This is about the JK truth table. क्या था? जब 0 0 है तो Q1 आ रहे हैं हमारे स्टेट, 0 1 है तो आउटपुट 0 है, 1 0 है तो 1 है जो हम लोगों ने अभी सेट रिसेट किया उसके हिसाब से. और जब 1 1 रहता है तो दिस इज अ QN बार. कॉम्प्लीमेंट रहता है उसका. So this is about the truth table. So next you have to find out first next state table and then you can go for the excitation table. So what do you mean by next state table? See, J, K, Qn. Current present state we are calling it as a Qn and next state we are representing it as a Qn plus 1. Okay. Now what first step में क्या बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देखो, J0 है, K0 है. So J0 है, K0 है, Q1 क्या आ रहा है? Q1 0 है. तो Qn plus 1 क्या रहेगा? This will be 0. क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेट कैसे आ रहे हैं? Qn. Qn plus 1 क्या है? Qn आ रहा है जब when we are applying J as a 0, K as a 0, we are getting next state as a Qn. Okay. Now see, just we are splitting this term. J is a 0, K is a 0, Qn is a 0, then Qn plus 1 क्या रहेगी? जीरो. Whenever J is 0, K is 0 and हमारा अभी Q1 बोल रहे हैं कि हम लोग 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा? 1 ही आएगा. See, just only we are splitting these terms. J0, K0, we are saying it as a Qn. But we don't know what is Qn. Qn can be 0, can be 1. Just only we are splitting these terms that Qn can be 0 and can be 1. When Qn is a 0, then Qn plus 1 we are getting as a 0. When Qn is a 1, we are getting it as a 1. इतना ही हम लोगों ने सभी जगह स्प्लिट किया है. अभी 0 1 की कंडीशन है तो 0 1 के लिए क्या रहेगा? आइदर Qn can be 0 and Qn can be 1. So whenever J is 0 and K is 1, Qn is a 0, next state will be also Qn plus 1 will be 0. When J is 0 and K is 1, Qn is a 1. Suppose Qn is a 1.
What should be the next state? It should be again 0 क्योंकि ये reset में आना चाहिए. So this will be 0. समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूज हो रहा है? मैम प्रेजेंट स्टेट को तो तभी कंसिडर करेंगे ना जब अगर जे के फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है, तो जे और के जब 0 रहेगा तो सिर्फ तभी प्रेजेंट स्टेट को ना कंसिडर करेंगे, बाकी सब में तो सेट रीसेट और टॉगल ही आ जाता है. हाँ, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? We have to find out the input from the output for excitation table. So whatever, whenever there is a Q1, just we are splitting that Q1 as a 0, 1. Okay? See, सेकेंड के लिए अभी 0J है, K1 है. आप बोल रहे हैं वैसे यहाँ पे Q1 का कोई मैटर ही नहीं करता है. Q1 doesn't matter here, isn't it? That you mean? Yes. मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है काफी समय से. फिर से किया ही नहीं था क्या फिर मैंने शेयर अभी? ओके, मैम वो बीच में बंद हो गई. अभी है स्क्रीन तो आप लोगों को दिखनी चाहिए, नहीं तो सिक्वेंशियल में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. अभी कैसे अभी होता है ना, तो बोलना करो, मुझे समझ में नहीं आता है. ठीक है? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, मैम विजिबल. Okay. See, just we are splitting the term for finding out the excitation table. For truth table, you don't need to consider Q1 and Qn plus 1 because as you are saying that J, whenever J is 0 and K is 1, Qn plus 1 is a 0. Whenever this is 1 and this is 0, Qn plus 1 is a 1. But for a simplification purpose, where because for ENT student there is a K-map based on this. I'll give you the handwritten notes for this. Now just you keep in mind that you have to split Qn to find out the next state table. Okay? There is no, there should not be any confusion in this. Whenever J is a 0, K is 1, your Qn plus 1 is going to be 0, 0 only. Just you have to take whether Qn is a 0 and Qn is a 1. Now see here it is going to be changed. J is a 1, K is a 0. Okay, and Q is a 0. So what here? Qn plus 1. शुभम, चेंज समझ में आया? You got it? ये देखो, J is 1, K is 0, Qn is now 0. हमारा Qn जो था ना वो 0 था, तो अभी J1 होता है तो सेट होता है. So it will switch from 0 to 1 even though your Qn, that is a previous state, was a previous output was a 0. Got it? Whenever J is 1, K is 0, this is Q is 1, when Qn plus 1 is also 1. Whenever 1, 1 is there, Q is a 0, Qn plus 1 is a Q bar. So Q is 0 now. So Q bar will be? Q bar will be? 1. Yes. लास्ट टू टेबल में लास्ट का देखो, ये 1, 1 में क्या है? 1, 1 के लिए Qn बार आ रहा है. अभी 1, 1 दिया है इनपुट, तो Q1 सपोज हमारा 0 है, तो क्या आएगा? 1 आएगा. Q1 अगर हमारा 1 है, तो क्या आएगा? 0. यस, 0. सभी को ये समझ में आया नेक्स्ट टेबल? Yes, ma'am. कौन सी टर्म नहीं समझ में आया रिपीट करनी तो अभी बोलो, क्योंकि एक ट्रूथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल एक समझ में आया तो एसआर का ही इजी है. नेक्स्ट तो सिर्फ एसआर ही है. मैम जैसे अगर एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ आउटपुट रहेगा, उसके हिसाब से हमें इनपुट प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. तो मैम अगर प्रेजेंट स्टेट हमारा 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो ये कैसे हम पता करेंगे कि वो टॉगल है या फिर रीसेट है? तो इसीलिए हम लोग ये नेक्स्ट टेबल स्प्लिट करके कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे, जब जेके का ट्रूथ टेबल बना रहे थे तभी भी क्यू और क्यू बार, क्योंकि उसको फीडबैक है. कैन यू रिमेम्बर दिस डायग्राम? ये फीडबैक है, isn't it?
output Yes, is given to the input. So we are assuming first, we have to assume it, we can't predict. जब हम लोग theoretical analysis किसी भी चीज का करते हैं तो you have to assume it. Practically तो assume करना नहीं पड़ता है, वो तो आ ही जाता है जो दिखाई देता है, लेकिन theoretically analysis के लिए what we are doing, we are assuming. See excitation table, then you will understood. Okay, JK excitation table देखो, QN है और QN+1 पता है हमको, ऐसा है इसमें, और you have to find out the J and K. Okay, see whenever Qn and Qn+1 is a 0 0, Qn 0 है, Qn+0 0 है. अभी आप नेक्स्ट टेबल ऑब्जर्व करो. This is a first row, Qn 0, Qn+1 0. Third row, Qn 0, Qn+1 0. Is there any other row? no, ma'am. No. Now similarly, first and third, observe first J and K condition. It is a 0 0. थर्ड रो में J की कंडीशन क्या है? 0, लेकिन K क्या है? 1 है, 1. तो पहले क्या था अपना K? फर्स्ट रो में 0 था. 0 था. So see what you can make a conclusion like this. जब हम लोग क्या K map बनाते हैं, then when it is going to change the state, what we are saying, whenever you need a Qn equal to 0, हमें ऐसा आउटपुट में चाहिए Qn equal to 0 या आ रहा है, तो इनपुट कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? Qn 0 है, Qn+1 0 है, so J is compulsory 0. Can you say like this? Yes, ma'am. J यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब 0 0 आने के लिए मुझे J 0 ही चाहिए. What about K? Should मैम प्रेडिक्ट अभी नहीं कर सकते, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता means don't care. It is a don't care condition. It doesn't matter whether either K is a 0 or K is a 1, you will get this condition. Isn't it? है. Yes, ma'am. From this output, whenever Qn is a 0 and Qn+1 is a 0, whenever J is a 0, whenever J is a 0, doesn't matter K is either 0 or 1, you will get this output, or from this output you can predict this as an input. Is it okay? Then see the second row, Qn is a 0 and Qn+1 is a 1. कहाँ पे है ऐसा देखो, 1 2 3 4. 1 2 3 4 fifth. This is the fifth row, isn't it? Yes, ma'am. और कहाँ पे है? 7th row. Yes, observe the fifth and seventh. Now similarly for this, observe the J and K input. What about J? मैम J सेम ही रह रहा है, 1. Yes, J is a 1. So can I write J as a 1? Yes, ma'am. Yes. And what about K? मैम 5th row में 0 है, फिर वो चेंज होके 1 हो रहा है. Yes, fifth में 0 है और 7 में 1. It is a 1. So it is going to change, means I can say don't care. 0 है या 1 है K? Yeah, it doesn't matter. We are getting this as a output. Okay. So for 0 1, we can write the 1 for J and don't care for the K. Similarly, go for the 1 0, observe for the 1 0 and for the 1 1. See now 1 0, कहाँ पे है 1 0? कोई another बच्चा? Next student, शुभम आप छोड़ के 4th and 8th. 4th and 8. 4th, हाँ, correct. 4th and 8. See, for that, what you can say about K? Both are 1. 4th and 8th K में K is a 1, so both are 1. You can write a K as a 1. And what about J? Different है दोनों. So for that purpose, you can write it as a don't care. Either it change the state from 0 to 1, but it doesn't care. Whenever K is a 1, you will get this. So for the last one, 1 1, कहाँ पे है? Where is 1 1? Where is 1 1? Any other student? सभी को chance मिलेगा. Gayatri? 2.6. Yes. Now tell me about J and K. 2 and 6.
change. Tell me about J. Value of J, what is there? Different. Different means they are changing 0 and 1. So I can I write like this? Don't care. Yes. Yes. And what about K here? Same. Yes, 0, 0. So you have to make compulsory. You can write or you can predict that K is a 0. J doesn't matter, don't care condition. All of you got this excitation table? Understood? Yes, ma'am. Theory में question Yes, ma'am. रहता है इसमें. You have to prepare the truth table, next state table, and you have to form the excitation table. Okay? Is it easy one? एक बार समझ में आया ना तो कंफ्यूज नहीं होता है. अभी एसआर का आप लोग बोलो तो देन वी विल फिनिश द लेक्चर, विल स्टॉप द लेक्चर. थोड़ी देर के लिए लेने वाली थी लेकिन अभी हो गया. खत्म करते हैं लेकिन ये टॉपिक अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है इस यूनिट में. ओह शिट, ठीक है एसआर कंप्लीट करते हैं अभी. कोड फॉर टुडेज लेक्चर इज 20 कितना है, थर्ड है ना, 23 लिखो. बोलो मुझे अभी एसआर का ये जो है वो ट्रूथ टेबल है, आप लोग कॉपी करो. 0 0 0 1 1 0 के और टी तो सिंपल ही है, एक ही इनको इनपुट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं. बहुत दैट इज अ वेरी इजी. एसआर 0 0 0 1 1 0 1 1. नाउ व्हाट इज द ट्रूथ इन आउटपुट ऑफ दिस? व्हेनेवर इट इज अ 0 0 इट इज अ q1, इट इज 0 1 एंड यू डोंट नो क्योंकि एसआर में क्या रहता है 1 1 के लिए प्रोहिबिटेड कंडीशन रहती है. ओके. Now you have to find out similarly next state table from this. So just split Q1 as a 0 1. So see next state में क्या है, Q1 है. अगर मेरा Q1 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो next state में भी 1 ही रहेगा. इसमें doesn't matter, it will be 0 and 1. 0 1 के लिए क्या है 0 0 1. See Q is 0 है फिर वो 0 ही रहेगा, और 0 1 के लिए अगर Q1 1 भी है फिर भी वो 0 ही रहेगा. Similarly 1 0 1 0 0 1 split it, 1 1 0 0 split it like this. Okay. Now tell me, we'll see directly excitation table. Next is table आप लोगों को आएगा क्या फॉर्म करने में? Can you form it? Yes, ma'am. Yes. Take a screenshot of it and just analyze the things. Those who are not getting the points, just go through it, and in next lecture you can ask me. जब अगर it is not like that, each and every student will understand in a lecture only. If there is any confusion, you just go through the material and then you can ask me later on. Okay, in next lecture you can ask me, but just clear the things before the next lecture. Okay. Now see Qn and Qn plus 1, it is a 0 0. What about yes 0 0 कहाँ पे है हमारा? रो बोलो आप लोग फटाफट. First or third row. First and third row. What about yes? S. Both 0 0. Yes, 0 ही है and R is going to change. So R we are writing as a don't care. Where is 0 1? Fifth row, ma'am. There are total 8 rows. Fifth one. Where is 0 1? Fifth one. Fifth row, ma'am. Fifth one. Okay. Can I? Okay. Fifth one. What is happening in fifth one? Yes is 1 and R is 0. Okay. Here, see for the last there can be 0 1 Qn plus 1 second last, but we can't say it confirm. क्योंकि there can be 0 or it can be 1, so you can't predict that for 0 1 there will be 1 and
this only. So see, for SR there is a chain. For whenever it is a 1 0, it should be 0 1 only. For 1 0, SR should be sorry, for 0 1, SR should be 1 0 only. Got it? JK और इसमें से डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। Is there any difficulty? किसी को लग सकता है कि सेकेंड रो क्या है, सेकेंड लास्ट क्या है? It can be 0 1, isn't it? किसी को लग रहा है क्या? Then next 1 0, 1 0 के लिए क्या है? Where is 1 0? Fourth row. Where is 1 0? Fourth row. Is it a fourth one? Fifth one. हाँ नहीं वो बराबर है, फोर्थ ही है. So उस टाइम क्या है? S is a 0 and R is a 1. And for 1 1, for 1 1, where is a 1 1? Where is 1 1? Sixth row and second row. Second and sixth. Okay. For second and sixth, what you can say? What about S? S is changing and R is 0. 0. So that's why for 1 1, S is a don't care and R is a 0. Okay. DT we'll see in a next lecture. Just 5 minutes will require for this. But if you are having any difficulty regarding the JK and SR excitation table, you just all of you go through it. I will try to provide you handwritten notes on a Moodle. अभी एक्टिव है ना? देखा है कि किसी ने लेटेस्ट notes? Can you access the material now from Moodle? मैम रिसेंट देखा नहीं अभी। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा, मैं देखती हूँ, अपलोड करती हूँ, आप लोग एक्सेस कर सकते हो कि नहीं मुझे एक बार बोल देना। अभी तक जो पढ़ाया है वो मैं वहाँ पे ऐड करती हूँ, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू गो थ्रू इट। जब किसी को भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता दो, ठीक है। शुड आई एंड द मीटिंग? एक मिनट सर, शुड आई एंड द मीटिंग? यस मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके मॅडम ते जे ऑफलाईन मध्ये येतात हां त्याची लिंक कशी येते वेबसाईटवरती? येते ना, Left. कम एक्नॉलेजमेंट. लेफ्ट कॉल